मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद। I stand to oppose this RBD bill. In a democracy, the government must be transparent, but the citizen lives must be protected. But this government believes in the opposite. When we ask for data on poverty or deaths in COVID, the government says no data available. But the government feels it is entitled to collect all our personal and private data and use it for its own end. So there is a phrase in English called peeping Tom. In Hindustani phrase, it should be called Jhanku uncle, which the government indulging in. So the proposed section 3, subsection 3A violates the fundamental rights to privacy guaranteed by the Constitution and as recognized by the Supreme Court in Puttaswamy judgment, sir. Sir, information collected under RPI Act, Aadhaar Act, National Food Security, Passport Act, Motor Vehicle Amendment Act is all collected for that purpose alone. Interlinking and centralizing such diverse databases violates the principle of purpose limitation, which is at the heart of the right to privacy. Sir, the test laid down in Puttaswamy requires that there must be a statute for any state action that infringes on the right to privacy. NPR, no statute exists. Citizenship Act 1955 has no reference to any popular registration. This is backdoor NRC, sir, and it is completely unconstitutional. The government must first tell us when is the census going to happen. Linking of the proposed national database under RBD Act with electoral rolls is fraught with constitutional impropriety. And there is likelihood of such data being used for targeted disenfranchisement, voter suppression, and some electoral consultant, whether the Association of Billion Brains or Foundation of Billion Brains, can create a database that provides granular data on voters, their caste and religion. Sir, under RP Act, ERO has a statutory duty to conduct enrollment after assessing evidence. Linking this to applicant is violation of Article 324 and the RP Act. In Supreme Court judgment of Lal Babu Sen, Supreme Court held ERO responsible for deleting and adding the names. Sir, last year Puttaswamy judgment laid down threefold tests: legality, necessity and proportionality. These amendments does not meet these threefold tests. Centralized databases enable the creation of mass surveillance infrastructure that may be used for profiling, targeting and discriminating against citizens. Sir, amendment to section 17 is blatantly anti-poor as it extends to any person whose birth was not registered or incorrectly registered. 38% of children under age of 5 do not have birth certificates. 62.3% age of 5 have their birth registered and possess a birth certificate in 2015-16. Sir, National Family Health Survey 4 says only 56.4% of people in rural areas have registered births and possess birth certificates, whereas 82% of children under age of 5 group had these birth registered and possess birth certificate. In the light of limitations that are present in birth, death registration, it is unacceptable to allow for such groups to be treated as conclusive and mandatory. Sir, why is the election commission अभी बिल पास हो रहा है, उसमें सहयोग कीजिए, प्लीज आप पार्टिसिपेट कीजिए चर्चा में। There will be large-scale surveillance. The government can target and delete genuine voters, creating an exclusive criteria for the 2026 delimitation. Sir, I am thankful that they have come to me to show themselves. I am very thankful, sir. Sir, that is why I oppose this act, and I hope the government will send it to the concerned standing committee. अन्य मंत्री जी। महोदय, कई माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। स्पीकर सर, मैं शुक्रगुजार हूं हमारे अपोजिशन लीडर का कि बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया। सर, इन्होंने बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया, इनका शुक्रिया अदा करता हूं। सर, तो ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है। सर, उधर से चेस खेला जा रहा है, इधर लूडो खेला जा रहा है। सर, मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा ये है कि सर, सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। अब जबकि हमारे लीडर ऑपोजिशन ने अलाउ कर दिया बगैर प्रधानमंत्री के, मेरी आपसे गुजारिश है सर, मैं डिवीजन पूछूंगा, अब डिवीजन कराइए। स्वागत राय जी। Sir, with all the vehemence at my command,
I beg to oppose the National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. As has been mentioned before, that this bill is well outside the legislative competence of Parliament, because the Supreme Court passed a judgment in CA number 2357 of 2017 on 11th May 2023 in the matter of Government of NCT of Delhi versus Union of India. Now, to override the Supreme Court judgment, the government has brought forward a bill. This is totally autocratic. It abrogates. सर हो जाएगा सर. सर अब प्रेमचंद्रन को 4 बार मौका दिया, मुझे भी 1-2 बार दीजिए. सर वो कंप्लीट. सर I want to say that this is total abrogation of the legislative power of the Union Capital Territory of Delhi under Article 239 A of the Constitution. कल आपको पर्याप्त मौका दूंगा. चलाओ सदन पूरा, सबको मौका देंगे. अध्यक्ष पूरा समय, कल आप सबको पूरा समय दूंगा. अध्यक्ष महोदय, ये बिल पूरी तरीके से गैर कानूनी है. कानूनन बात करो. ये आप तो पूरी तरीके से गैर कानूनी है. आपको भी पता है, पेज 772 ऑफ कॉलन शक्दर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट में. मुझे कंप्लीट करनी थी. एक मिनट बैठिए. माननीय सदस्यगणों, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि ये संसद है और संसद में बोलते समय हर शब्द का उच्चारण ठीक होना चाहिए. हमारे गौरव गोगोई जी उपनेता हैं, वो बोलते हैं आपको भी पता है. अगर मुझे पता होता तो मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस ही नहीं करता. नो, मुझे पता होता तो मैं बिल को इंट्रोड्यूस कैसे करता. आप तो सीट पर आपत्ति पैदा कर रहे हैं कि मुझे पता है. मुझे पता होता तो मैं इंट्रोड्यूस कैसे मिलता. ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा. नो, इन शब्दों को वापस लो. ऐसे चलिए. चाहता हूं सर, मुझे संरक्षण की आपका संरक्षण चाहता हूं कि आपके पीठ से एक निर्देश जाए कि ये जो बिल है सब्सटेंटिव पॉलिसी नहीं है. और ये जो कॉल एंड शक्दर का जो लिखा है कि व्हेन अ लीव ऑफ हाउस टू द मूविंग ऑफ अ मोशन हैज बीन ग्रांटेड, no substantive motion on policy matter is to be brought before the house by the government till the motion of no confidence has been disposed of. Motion of disconfidence has not been disposed of. This is a substantive policy. It is illegal. It will be challenged and this has no merit, sir. अब ruling दीजिए कि ये substantive.